Good afternoon. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and in today's session we shall be talking about critical reasoning questions. I hope I'm clearly visible and audible to everyone. Good afternoon, everyone. Can you hear and see me very clearly? Good afternoon, everyone. Hi, Preeti. I hope I'm clearly visible and audible. Yes, clearly visible and audible. Okay. So, in this session, we shall be solving some strengthening and weakening argument questions. And we'll be understanding what exactly is an argument, how do we strengthen or weaken an argument, because once we understand these three concepts, understanding critical reasoning becomes a cakewalk. Specifically understanding this pointer, because once you don't understand an argument, you will certainly never be able to get a critical reasoning question correct. So that's what our agenda in the class is going to be. This class will be divided into three parts. This is our first part today. So, yes. Now, before I start off with anything, if you are targeting the BBA, IPM or HM examinations for 2023, a comprehensive course has been launched. And this is the number of our counselors. You could speak to them at the earliest if any of these examinations is your target for 2023. Because the sooner you start, the easier your prep would be. And this batch will make sure that you prepare aptly for all these three examinations. Specifically the similar kind of questions that we see in all of them. So, jaldi se enroll kar lo. If you're targeting the CUCET for 2022, a champion course has been launched on 14th of March. You could speak to the counselors on this specific number. If you are targeting the CUCET for 2022, since the notification is out और बहुत सारी और patterns आने वाले हैं, जल्दी से enroll कर लो इस exam के लिए. अगर आप हमारे channel पे रोज आते हो, you know we have a lot of free classes happening every day. So we have quantitative ability free sessions on a YouTube channel every day at 11 AM. We have many more sessions every day. So you could come live with us every day to attend these free classes. 12:30 like I come live, then there are GK and math sessions as well, and you've got reasoning sessions as well. I'm sure you would not want to miss out on the sessions by the best faculty in the entire industry. We've got Ruhindip ma'am, Rabia ma'am, Salik sir, Vinod sir and Ankur sir. So that was about our programs. No, they are different, Muskan. They are different. CUET is for Christ University. CUCET is for the other universities. Many universities take admission through CUCET. So they are not the same. Good afternoon, Vivek and Dia, Muskan, Ali, Preeti. So ready, and Dhruv as well. Good afternoon, Dhruv. So in revision, what are we going to do in today's session? I will be giving you some questions. You have to identify the argument in the question and answer the question that follows. So your question could be the strengthening question, a weakening question, or strong and weak argument question as well. So here, this is the paragraph given to us. This is the first question that we have. Read the paragraph very carefully, twice or thrice maybe. And then after you identify the argument that is put across by the author, you have to strengthen the argument. Strengthen means you have to talk in support of what the author is saying. So any option out of these that supports the author's point of view will be strengthening the argument question. Give this a go, everyone. I'll wait for your answers. Give this a try. Which two are you referring to, Kavya? The CUET or CUCET examination or something else? Muskan, CUCET. D, okay.
and C. Okay. Others. Okay. So Kafya, C. CUET is specifically for the Christ College's entrance examination. The various campuses that Christ College has, through CUET only and only Christ is the college that you would be able to enter in. But CUCET, there are many colleges that you would be able to get. Rather, universities that you would be able to get into in. That's the difference between these two examinations. Okay. Okay. Now let's understand the question here, everyone. The question here, let's understand the argument, because as I say, the main problem about getting these strengthening and weakening questions correct is understanding the argument. What is the argument given to us by the author? He says that sometimes people say that even if there are two political parties, it is a democracy. Will it be a democracy if you have only two political parties according to the author? He says no. In two-party system, there is no democracy. Sometimes people think of it, but it is incorrect to think of any country with only two-party system as a democracy one, because two-party system तो क्रिकेट या फुटबॉल में होता है, स्पोर्ट्स में होता है. Is politics a sport? No, it is not. That means any country where there are only two-party system, you cannot term it as a democracy. This is the author's belief. This is the author's argument. Okay, I have to talk in support of the argument given by the author. Okay, so anything that you say that talks in the similar line of the author would be strengthening your answer. Agreed? Yes. Now, just a minute. Yes. Now, the first option says two-party system functions well. The functioning of a two-party system, be it good or bad, doesn't surmount to democracy. Some people may say a dictatorial government functions well. Some people may say any kind of governance that's autocratic can also function well. But the functioning or well-functioning of any party system doesn't link at all to the country being democratic or non-democratic. This option has no link with the argument that in a two-party system we cannot have a democracy. No link. Option B says politics is a dirty game. Politics कैसा गेम है उसके बारे में ऑथर ने कुछ बोला है? नहीं. उसने सिर्फ ये बोला है कि जहां दो पार्टी सिस्टम होती है वहां डेमोक्रेसी नहीं होती, चाहे पॉलिटिक्स अच्छी हो चाहे पॉलिटिक्स खराब हो. दिस डज नॉट ऑल्सो लिंक to our argument at all, neither support nor weaken. I am left with two options. Let's see if 3, the C1, supports my argument or not. Good afternoon, Shrishti. So C says two political parties limit the choice of voters. Okay, choice of voters. Can I say it is an inevitable part of democracy? Can I say that? Yes or no? Answer this. Can I say the choice of voters is an inevitable part of democracy? मैं जाऊंगी बुफे में 10 मिठाई है तो मैं चूज करूंगी मुझे कौन सी मिठाई खानी है. In a buffet, I have the right to choose, right? So, choice of voters becomes an inevitable part of a democracy. Yes, absolutely yes. When I have only two political parties, will I have a limited choice? Yes, I will have a limited choice. That is this option saying in two political parties, the democracy in a country is hindered because choice of voters equals to democracy. So, can I say when there are only two political parties, it limits the democracy? Yes, it does. When two political parties limit the choice of voters, when two political parties limit democracy, it hampers democracy. Is it talking in support of the fact that when there are two political parties, you cannot have a democracy? Yes or no?
Think of it. Yes or no? The answer is an absolute yes. It's an absolute yes. It gives you another reasoning why two political parties cannot help democracy, rather ruin it. Exactly what the question said, that two political party system cannot be democratic. The answer is going to be not D but C. The answer is an absolute C. Okay? Ali, got that my child? ठीक है, ये सेम लाइंस पे बात कर रहा है जैसे क्वेश्चन ने बात किया था. बिल्कुल करेक्ट है ध्रुव, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. Read the paragraph, see which one of the following talks in favor of the argument given by the author. Easy. Yes, Diya, it is the one that's strengthening. Next question. नहीं पांडा, रीजनिंग में सोशल साइंस नहीं आता. रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग आती है. वहां आपको इन्फर करना जरूरी है. तो अगर एक वर्ड डेमोक्रेसी लिखा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है. आपको उनका मतलब पता होना चाहिए. मतलब लगा कि आपको रीजनिंग लगानी है. ओके, तो सोशल साइंसेस के वर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल साइंस के वर्ड्स भी हो सकते हैं, फिलॉसफी के वर्ड्स भी हो सकते हैं. आपको उन वर्ड्स का मीनिंग और इंप्लीकेशन पता होना चाहिए. यूनानिमस ए, बिल्कुल बिल्कुल सही. ए एंड बी दोनों लग रहा है. ठीक है, डी लग रहा है. चलिए मैं समझाती हूँ क्वेश्चन. ओके, सो द क्वेश्चन सेज we have planned development with a view to raising our standard of living for our teeming millions. इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि in the society that we are in, development will happen when the standard of living of the people will increase. Okay, so development is equals to better standard of living. Cool? Hence, our economic development is inspired by social justice. Now, the author is drawing a conclusion here. And when there's a conclusion in the argument, remember, the conclusion becomes a very important one. Let's understand what the conclusion is. So, the conclusion says, our economic development, that is this, can be impacted by social justice. Social justice is, आपको भी सोशल बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा. कोई डिप्राइव्ड नहीं है सोशल बेनिफिट से. सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, क्योंकि जब आप किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रखते हो तो वो सोशल इनजस्टिस हो जाती है. इसका मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो सोशल जस्टिस होना जरूरी है. ठीक है. Which of the following strengthens the argument? Option A says social justice can be done by raising standard of living. क्या ऑथर ने इस टर्म को और इस टर्म को लिंक किया था डेवलपमेंट की बात करके इनडायरेक्टली? ये जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, इसमें एक नया वर्ड आ गया, सोशल जस्टिस, जिसको डेवलपमेंट से लिंक किया. प्रीवियस लाइन में भी डेवलपमेंट की बात थी बट कोई और वर्ड था. तो जब दोनों में कॉमन है डेवलपमेंट, तो इन दोनों में लिंक जरूर होगा, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल जस्टिस. जब दोनों में लिंक है तो दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं. दैट्स क्लियरली विजिबल विथ ऑप्शन ए, दैट सोशल जस्टिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच विल अल्टीमेटली लीड अस टू द डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी. द आंसर इज एन एब्सोल्यूट ए. बी में भी कुछ लोगों को डाउट था, इकोनॉमिक प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर एवरी स्टेट. नो,
rather than economic planning, what is necessary is increment in the standard of living and social justice. These are the important things if we need development. This is not necessary according to the author. These are necessary. B cannot be our answer. C says for economic development, production should be increased. No, not production. Social justice and standard of living have to be increased. That's what the question says. The answer is an absolute A. Let's look at the next question, everyone. What you're supposed to do here? Ruko, my body might be hiding the question. Dekho. I'll have to fix this. Give me a second. Give me a second. No, I can't do that. You'll have to understand this on your own. Okay? Now I think this will help you. Chalo dekhte hain. Okay? Read the question. What are you supposed to do here? So in this question, understand this. I will be giving you an argument, a question here, and 2 arguments. You have to tell me which of the arguments are strongly put argument, forceful argument. ऐसे argument जो अगर आप एक जज के सामने देते हो, वो जज आपके argument सुनेगा. अगर कोर्ट में केस चल रहा है, शुड इंडिया अक्वायर लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन, और 2 लॉयर्स ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो किस किस के आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली पुट हैं और किस किस के आर्ग्यूमेंट वीकली पुट हैं. दोनों भी स्ट्रांग हो सकते हैं, दोनों वीक भी हो सकते हैं. आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन. वीडियो टीम इसको ब्लॉक करो, स्नूप डॉग को. वीडियो टीम ब्लॉक करो इसको अभी. ये कहां से आ जाते हो तुम लोगों को? कोई शर्म नहीं है? क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपनी लाइफ का और हमारी लाइफ का? कुछ अच्छा कर लो जीवन में बच्चे. कहां जाओगे ये लेके? क्या कर लोगे इसको देख के जीवन में? कुछ अच्छा कर लो. वर्क हार्ड, डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ. एक बात याद रखना बच्चे, तुम जो भी हो, लाइफ इज अ सर्कल. इट विल कम बैक टू यू इन सम मैनर और द अदर. हम और बाकी बच्चे तो पढ़ लेंगे. आंसर क्या बताइए? ए, बी, ओके. A, B, ठीक है. Let's see the question. I'm sorry guys, it was a little disturbing. I'm sorry. So the question is, should India acquire the latest nuclear weapons? Yes, India's enemies are continuously improving their armaments, and no, this will be counter to our policy. Okay, चलिए समझते हैं. So the question is, मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, चलो आंसर नहीं बताती हूँ, लेट मी हेल्प यू. ठीक है, आप चेंज कर सकते हो अपना आंसर. शुड इंडिया अक्वायर द लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स. जज के सामने केस चल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए मेरे पास? एक बंदा बोलता है जाके जज को, एक लॉयर बोलता है कि यस, हमारे एनिमीज के पास लगातार आर्म्स एंड एम्युनिशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको भी न्यूक्लियर वेपन लेना चाहिए. क्या जज आपकी बात सुनेगा? आपका एनिमी, सिंपल फंडा है, आपका एनिमी कुएं में जाके कूदेगा तो आप भी कूदोगे. कोरिया, नॉर्थ कोरिया XYZ चीजें करता है तो हम भी कर लेंगे. जरूरी नहीं है ना, पाकिस्तान XYZ चीजें करेगा तो हम भी कर लेंगे. जज बोलेगा क्या लॉजिक है, एनिमी को करने दो. अगर आपके पास ऑलरेडी नो हाउ है तो लेटेस्ट से लेटेस्ट इकट्ठा करने की क्या नीड है? अगर आपको अपनी आर्मी पे कॉन्फिडेंस है तो आपको इतना पैसा सिर्फ क्योंकि एनिमी कर रहा है, इसीलिए आपको भी करने की नीड है. जज विल नॉट लिसन टू यू.
Judge will not listen to you. Answer A तो बिल्कुल गलत है. True Ali, I agree with you. A बिल्कुल गलत है. Okay. Vivek, we're going to do 5 questions. So A तो गलत है, weak है. Second, no, this will counter to our policy of global peace. अच्छा देखो, जो लिखा होता है ना आर्ग्यूमेंट में, उसको हम ट्रू मानते हैं. ठीक है. अब अगर ये ट्रू है तो क्या जज मेरी बात सुनेगा? If acquiring latest nuclear weapons goes against our policy of global peace, should we acquire nuclear weapons? No, we should not. Shrishti, B is a very strong argument. Absolutely Ali. B is a very strong reason. Muskan, अगर हमारा पॉलिसी है ग्लोबल पीस का और हम खुद ही न्यूक्लियर वेपन ले रहे हैं तो हम कैसे ग्लोबल पीस कर रहे हैं? फिर खुद ही हम आर्म्स एंड एम्युनिशंस कलेक्ट कर रहे हैं. अगर आप जज को बोलोगे सर फिर ग्लोबल पीस कहाँ गया तुम्हारा, अगर तुम खुद ही न्यूक्लियर वेपन लेके आओगे तो आप तभी ग्लोबल पीस दिखाओगे जब आप खुद इन चीजों में इंडल्ज नहीं करोगे. दैट मीन्स द जज विल लिसन टू दिस आर्ग्यूमेंट. द आंसर इज एन एब्सोल्यूट बी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. Got that? Yes. B is a strong argument. Okay. Let's look at the next question. Similar question. इसको true मान के देखो, क्या ये strong है? Similarly, second. Should the government ban microfinance? Solve this. Should the government ban microfinance? Yes. They are running huge losses owing to the low degree of repayment of loans by the poor families. And the second, it is the sole source of easy finance and loans for the poor. Both? अच्छा, okay. Dhruv, इसका आंसर बताओ. Tell me what the answer should be here. So let me explain this. ठीक है. So in the court the case is going on. Should the government ban microfinance? Okay. Microfinance होता है छोटे छोटे loans देना जो poor लोग होते हैं उनको, जिनके पास कोई गारंटी नहीं होती है उनको. ठीक है. अब अगर microfinance का पर्पस ही है poor लोगों को हेल्प करना तो obviously repayment भी poor होगा. और microfinances क्योंकि पुअर लोगों के लिए होता है, ये उनके लिए एक गवर्नमेंट शील्ड की तरह यूज करती है ताकि वो अपनी लॉसेस से रिकवर कर सके. तो इनडायरेक्टली यू नो पैसा दे देना कि चलो तुम्हारी फसल खराब हो गई, ये लो 2 लाख रुपए, ऐसे देने की जगह गवर्नमेंट उनको माइक्रो फाइनेंस दे सकती है कि फसल खराब हो गई, कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए हमसे ले लो, कोशिश करो अगले साल फिर अपनी फसल लगाने के लिए. ये माइक्रो फाइनेंस होता है. ठीक है. Now the argument says yes, microfinance बैन कर दो क्योंकि बहुत लॉसेस हो गए हैं हमको, क्योंकि रीपेमेंट लो होता है पुअर फैमिलीज का. अगर रीपेमेंट लो है पुअर फैमिलीज का तो क्या तुम माइक्रोफाइनेंस बैन कर दोगे? माइक्रोफाइनेंस तो एक सोशल वर्क है ना. माइक्रोफाइनेंस तो पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए ना गवर्नमेंट का सिस्टम. अगर आप पुअर फैमिलीज क्योंकि वो रीपे नहीं कर पाते आप बैन कर दोगे माइक्रोफाइनेंस, तो पुअर फैमिलीज का क्या होगा? वो कहां जाएंगी? आप कैसे हेल्प करोगे पुअर फैमिलीज को? तो जब गवर्नमेंट का डिसीजन होता है माइक्रोफाइनेंस देना, वो अल्टीमेटली पुअर फैमिलीज को हेल्प करना चाहते हैं. काव्या, यस, एग्जैक्टली. दिया, इफ इट इज रनिंग थ्रू लॉसेस, it doesn't mean you ban it. You figure out a strategy of recovering the losses or finding an alternate solution to rectify the losses.
सिंपल एग्जाम्पल है, एयर इंडिया लॉसेस में चल रही थी तो क्या बंद कर देंगे एयर इंडिया को? नहीं किया ना, रिकवर करेंगे। कोशिश कितने साल करी गवर्नमेंट ने इसको रिकवर करने की, राइट? सो वीक आर्ग्यूमेंट। द सेकेंड वन, it is the sole source of easy finance for loans. If this is true, it is the only source of easy finance and loans for the poor, तब तो ये एक desirable argument है। Desirable means most of the people will want it to continue. If what is written is a desirable one by the public, it becomes a very, very strong argument. B is a super strong argument. Got that, Dhruv? B is strong, A is weak. So, B is a strong argument because it will be desired by the public, because it is the only source of easy finance and loans for the poor. And everybody wants poor to have easy source of finance and loans so that they can work harder. Strong argument is only and only B. Let's look at the next question. Similar question. Here we go. Should street lights be switched off after midnight? No. Statistics show that crime and accidents increase if the street lights are switched off. Yes, few vehicles ply after midnight. Expensive electricity will be wasted. यहाँ मुझे पता है काफी लोग गलती करेंगे, मुझे पता है तुम कैसी गलती करोगे. Let me see if you can try solving it. Vandana says B. Okay. A. देखो मैं बताती हूँ आप गलती क्या करते हैं यहाँ पे. इस क्वेश्चन में यूजुअली लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, वो मिस्टेक ये होती है कि आप इन दोनों को कंपेयर करने लग जाते हैं. स्पेसिफिकली जो लोग ए बोल रहे हैं वो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, पहले एक को इंडिविजुअली देखो, एनालाइज इट, मार्क इट स्ट्रॉन्ग एंड वीक. वंस यू आर डन विद इट, फॉरगेट दिस, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर यू. Look at this individually and then analyze it. Do not compare them, because if you compare them, obviously one will be stronger than the other. Never compare them. Now let's understand how the answer can be found here. Ali, यही mistake तुमने करी यहाँ. तुमने दोनों को compare कर दिया. And that's why you got this wrong, my child. Let's see this question again. Should street lights be switched off after midnight? First argument, accidents, crime, increment. This is a desirable argument. When you tell it to the judge that, sir, if the lights are off, the crime and accidents increase, please don't turn them off. He has a very strong point that the judge will listen to. Fair? A बिल्कुल strong है. अब B को देखो. भूल जाओ एक्सीडेंट और क्राइम होते हैं, भूल जाओ उसको. अकेले देखो, अगर सिर्फ कुछ ही, बहुत ही कम व्हीकल्स मिडनाइट में चलते हैं तो क्या उनका हेडलाइट से काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है. क्या हम बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं उन दो गाड़ियों के लिए जो रात को वो सड़क पार करेंगी? बिल्कुल बचा सकते हैं. क्या बिजली बचाना डिजायरेबल है? बिल्कुल डिजायरेबल है. द आंसर इज सी, बोथ आर स्ट्रॉन्ग. Both are strong. Both. ध्रुव, आया समझ में? यही गलती आपने करी, आपने दोनों को कंपेयर कर दिया. भूल जाओ एक्सीडेंट और क्राइम होते हैं. हाईवेज में कम क्यों होती है लाइट्स रात को? क्योंकि कम व्हीकल्स रात को चलते हैं, उनकी हेडलाइट से काम चल जाता है. अब बहुत सारी बिजली बचाते हो, है ना? गांव में सड़कों पे हेडलाइट्स कम क्यों होती हैं? क्योंकि कम व्हीकल्स प्लाई करते हैं. सो यू लुक एट देम सेपरेटली एंड देन यू सी इफ दिस इज अ स्ट्रांगली पुट वन. इफ यू से दिस, ओनली दिस टू द जज, he will listen to you.
He might counter it later on, but he will listen to you that saving electricity is desirable. Thus, it's a very strong argument. Did you like the session? Did you? If you didn't, do it right now. I went through some verbal abuse right now in the class. I need the appreciation before I wind up the class with you. Tomorrow I'll come back again at 12:30 with the second session on critical reasoning. Make sure you be on time and have a very good day, everybody. God bless all of you.